नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक बेसिक इंटेंशन है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी, टिप्स, टेक्निक्स और जो टूल्स मैंने इस साल एमएचसीईटी को क्रैक करने के लिए यूज़ किए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम जोना नागपाल है। दिस ईयर I scored 123 out of 150 and for the time being my serial number is 28 and I hope this video helps you. Why law? This question has a simple answer for me. I love how system and people interact. And I believe law is something that is just on paper, beyond paper, in fact. These idealistic answers might be true in my case, but let me tell you the other truth as well. So, in 11th, 12th, I took non-medical and it did not quite work out for me. My father was a lawyer, is a lawyer in fact, and that actually gave me the idea of pursuing law entrance examination. And from 12th class, I took them really seriously. And one interesting or really cool story that I feel is that my really darling aunt Kitty Bua wanted to pursue law, and that actually influenced my father to pursue law as well. So they guys did law together back in the day, and now it influenced me to do law as well. Currently, everything's scattered on my table. Okay, so one thing that we can say about competitive examination is that we don't know the confines of syllabus. So you have a lot to do and make sure that you manage that stuff unlike my scattered table, because otherwise you'll get overwhelmed, you will start to procrastinate, and this would get in loop and you would not get your stuff done. One general trick that I believe, or it's not even a trick, it's a technique or a principle, I would say, is that of deliberate practice. Whenever you're sitting on your table, have intention of doing something. Like for me, whenever I sit on my table, I had the intent of learning something new, of cutting my question time, even if it's just a few seconds less than what it was. The second thing that entails in deliberate practice is discipline. You have to be disciplined so that when there are periods when you're feeling down, when you're sick, because I have been sick a lot the past year, or eventually when you're not sure as to whether you're going the right way, you'll also always have this consistency that you get from discipline to back you up, and that would actually give you both confidence and results. Now, the third thing that I would conclude the principle of deliberate practice by would be observation. Observing what other people are doing, how they are doing it, so that if you reach saturation, or even if you do not reach saturation, you can improve what you're doing. Let's get to know the exam that we would be giving a little better. I'll actually show you the official site. वैसे तो मुझे लगता है आप लोग मेरी बात भी मान लेते, बट ऑफिशियल साइट एंड ऑफिशियल सोर्सेज आर ऑलवेज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर. यप, हियर इट इज़. सो एमएचसीईटी की सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि इट हैज़ नो नेगेटिव मार्किंग, बट इसका मतलब ये भी होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड इन 150 मिनट्स, एक्चुअली 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस आर सफिशेंट. आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड धीरे है तो आपको काफ़ी सारे मॉक्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी भी, और आप वो करते रहिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी है तो भी. नाउ दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स दैट वी वुड बी डीलिंग विद. मैं आपको सबकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एंड आई वोंट बी कवरिंग स्टैटिक जीके बिकॉज वो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी. और अगर मेरे को टाइम मिलता पहले तो आई वुड हैव एक्चुअली प्रिफर्ड स्टडिंग. आई जस्ट took it a bit heavy, but it was really important. At the end of the day, it could have given me 2 to 4 marks extra that could have meant a single digit rank. But yeah, life's not that bad after all. 28 isn't that bad a number. Okay, so a few general instructions other than that would be: the questions will be objective multiple choice.
with four options. There is no negative marking. A good thing. The time allotted is 2 hours, that is 120 minutes. The questions will be in English and Marathi, and the English section would be in English. Let's get into the subject wise strategy. Now, for English, you need to remind yourself that it is further divided into three sections. Comprehension. Now, the fact that comprehension is not that hard in MHCT paper shouldn't stop you from practicing higher level questions, because this section would actually help you in other sections like legal aptitude as well. The second thing that would extremely help you would be vocabulary skill, word or your word skills in general. The third section, that is a determiner of your rank, would be grammar. And again, grammar is something that you should properly practice. For comprehension, I use this book. Now, I wouldn't actually suggest you to buy this book if you're just preparing for MHCT, but otherwise, this book is quite well. If you do not want to purchase this book, then there's a simple technique that you can do. Just go ahead, go to GMAT Club, or just do CAT के comprehension के questions. And you don't even have to go to the highest level of difficulty. That won't even be useful for CLAT because they are really hard. So you can just do away with the easier level of questions, and that would actually help you a lot. Now there's this amazing tool that I found online apart from doing the book of Norman Lewis, and I would like to share this with you. For grammar, I use these two books. One is Chance Arihant's S.P. Bakshi, the other was R.S. Agarwal. I liked it for its miscellaneous section and this for subject-wise section. In general, I'll suggest जिसका भी रेट सस्ता हो ले लेना, दोनों लेने का कोई मतलब नहीं है. Also, you can practice comprehension from these two books. Now, I don't think you would be surprised. I used this book, that is R.S. Agarwal, Verbal and Non-Verbal Reasoning, and this is extremely useful, and I would actually suggest you to buy this book. It has almost all the topics. I believe now the book is divided into two parts, verbal and non-verbal. Go ahead, buy the non-verbal one. You won't really be requiring the verbal one. And even if you do not plan to buy this book, then just make sure that you borrow this book and do the puzzle chapter of it. It would be extremely helpful for MHCT. For legal, you don't have to buy any book as such. Just make sure you are familiar with the three basic topics, that is torts, crimes, contracts. Just have a basic reading, that would be more than enough. Other than that, you would need some practice, and I actually would be coming back to general strategy after I complete the subject-wise strategy. So just wait for that. Now for quant, I don't think you are going to be surprised again. This is the book R.S. Agarwal, Quantitative Aptitude. It has all the topics, you can use it, and it would actually prepare you for both the hard question and the easy questions. I believe in MHCT the questions are little towards the easier side, but still it would benefit you to do even the hard questions because that eventually helps you. For legal GK, you can be in touch with the paper and make basic notes of whatsoever topic that you are covering. For here, example, I have right to privacy here. This is surrogacy bill that recently came out. This would actually help you with both the GK section and the legal section. This year, the paper did not have questions for legal GK, but it could be there in the next year's paper, so be prepared for it as well.
Now, this thing is actually going to help you with the comprehension of your English section as well, and that is reading newspaper daily. Now, just pick up a newspaper that you have. It could either be the Hindu or the Indian Express, and read it daily. Apart from that, you've got to stick to a source, an online source such as can either be GK, Today.in, Cloud Affairs, all the general sites that are there. Just stick to one, make notes daily, and I can show you the sample notes that I made. So this is from the month of November. Actually made the notes like this. These sides have the question, these sides have the answer, and I made the section foldable, so whenever I am looking at the question, I'm not exactly looking at the answer, but because that can actually create an illusion of understanding or remembering. The harder your brain has to think about something, the more effective for it is to remember something. So I believe this strategy really helped me. Apart from that, I also made general notes, like simple notes without any foldings. Now these were the one-liners. Something that I actually did for covering the topics in detail was to make spider webs. So this is the topic and I basically covered it, and this is actually really simple to revise and revisit, and I don't actually like writing a lot of theories, but again I have a few tools that I use that I think are extremely useful and I'll be sharing. Now that you are done with the subject wise strategy, अब आती है practice की बारी, and one among the most efficient way to practice would be giving mocks. और तुम्हें सिर्फ MHCET के मॉक्स नहीं देना, तुम्हें पुराने क्लैट के, एलेट के और जो भी तुम्हें एग्जाम रेलेवेंट लगे उनके भी मॉक्स देने हैं. एंड इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू टू गिव द प्रीवियस ईयर पेपर क्लैट. जैसे कि आई बिलीव लास्ट ईयर वाला क्लैट वाज हेल्पफुल, लास्ट ईयर्स क्लैट वाज हेल्पफुल. अभी से पैटर्न चेंज हो गया तो दैट वोंट बी दैट हेल्पफुल. एंड आई यूज दिस बुक फॉर डूइंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तुम्हें इन जनरल ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. सो जस्ट गो अहेड एंड डू देम, और मॉक करने में कोई भी कमी मत छोड़ना, अपनी तरफ से पूरा करना. अब तुमने मॉक्स दे दिए, राइट, और मॉक से तुम्हें मान लो स्पीड भी आ गई. अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें मॉक से करनी है और सीखनी है वुड बी mock analysis, because that would actually help you to build accuracy, and accuracy is the deciding factor in MHCET. Like सिर्फ मेरी रैंक में 120 मार्क्स में 24 से 40 बच्चे जो भी हैं सबके फिलहाल मार्क्स सेम है. तो आगे का आई बिलीव जो डिसर्नमेंट होता है दैट वुड बी थ्रू HSC परसेंटेजेस, बट या दैट्स देयर. ओके, सो दिस इज माय मॉक एनालिसिस नोटबुक. Abhi, the thing that you can see that might not be very clearly visible is the subject breakdown marks, जिसमें मैंने सिर्फ अपने marks वगैरह भी दिखे हैं. This is पुराना CLAT के pattern पे वाला analysis. I do not have a separate MHCET notebook. इसमें मैंने अपनी जनरल मिस्टेक्स भी लिखी है कि too many attempts और too little attempts और या फिर reckless attempts. Although तुम MHCET में सारे क्वेश्चंस करना, फॉर अदर पेपर जिनमें नेगेटिव होती है उसमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. अगेन अब इसमें मैंने सेक्शनल डिवीजन कर रखा है नोटबुक में. इनफैक्ट दैट्स द नोटबुक. तो अभी जैसे ये है, ये लीगल एप्टीट्यूड है, इसमें मैंने जनरल क्वेश्चन क्लैट 2017 से लिख रखे हैं. जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं क्लैट में और MHCET में मुझे पर्सनली काफ़ी सिमिलर लगे, और मैंने ऐसे क्विक फैक्ट्स लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा. यू कैन ऑल्सो पूरा क्वेश्चंस का फोटो करके कंपाइल कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली यूज द डिवाइस दैट यू हैव. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर लीगल रीजनिंग. और लीगल जीके में मैंने जनरल जो भी मुझे क्वेश्चंस यूजफुल लगे मॉक्स में से मैंने वो लिख लिया. एंड ऑल्सो तुम्हें थोड़ी बहुत स्टैटिक लीगल जीके की नॉलेज होनी चाहिए. मैंने MHCET की किसी पुराने पेपर में देखी थी. अदर देन दैट मैंने इंग्लिश के लिए भी अलग सेक्शन बनाया है, जिसमें ऑल्दो तुम पूरा RC नहीं लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि मेरे RC में कितने क्वेश्चन सही थे या कितने क्वेश्चन गलत थे. उसके अलावा मैंने अपनी वर्ड स्किल्स का जनरल ट्रैक रखा है कि वो कैसी है और क्या मुझे और एक्स्ट्रा बुक्स करनी चाहिए उसके लिए.
सिमिलरली मैंने ग्रामर के पॉइंट्स या फिर जो भी वर्ड्स मुझे यूजफुल लिखे वो किए, और मैंने ऐसा ऑलमोस्ट हर मॉक के लिए किया है जो भी मैंने किए हैं। उसके अलावा हमारे पास है जनरल नॉलेज। नाउ मुझे अपने सबसे सही चीज़ मॉक एनालिसिस में अपने जनरल नॉलेज का सेक्शन लगता है, बिकॉज लेट्स से मैंने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, लेट्स से जस्ट मैंने कोई क्वेश्चन सही भी कर दिया, जैसे कि फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई कैलकाटा, तो उसके नीचे आई वुड कवर सम स्टैटिक पार्ट या फिर सम एक्स्ट्रा पार्ट, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई कैन गेट इट करेक्ट। सो यही मैंने किया है, एंड ऑल्सो सम बेसिक पॉइंट जो कि मुझे लगा कि अच्छे हैं, एंड दैट एक्चुअली वुड ऑल्सो हेल्प यू अ लिटिल विद स्टैटिक जीके। उसके अलावा आई हैवंट या रियली प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज पर से मेरी पजल्स ऑलमोस्ट हर पेपर में सही गई थी, और जिनमें सही नहीं गई थी तो मैंने प्रैक्टिस के सेट्स लगा लिए थे अलग से। नाउ लेट्स से यू आर इवन डन विद मॉक एनालिसिस। अब जो तुम्हें चीज़ अपने लिए करनी है ना, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू विद एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, इज क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर सेल्फ। तुम हो सकता है अपने मम्मी पापा को बोल दो कि वो तुमसे रोज पूछें कि तुमने क्या किया, हो सकता है तुम अपने किसी टीचर या अपने किसी दोस्त को बोल दो। इन जनरल अगर किसी दोस्त को बोल रहे हो तो किसी सीनियर दोस्त को बोलना जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, जो तुमसे जनरल सवाल पूछे तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में, वीकली डेली जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि तुम अपने आप को मॉनिटर कर पाओगे जब तुम्हें उन्हें बताओगे, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज जब आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ना चीज़ों में, तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो। अदर देन दैट जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं, लाइक तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है ना उसे अच्छे से करना। तुम्हें बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। MHCT इज़ अ ईजी पेपर, यहाँ पे सारी चीज़ एक्यूरेसी का खेल है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इट्स समथिंग विच इज़ वेरी डूएबल। अब थोड़े से पार्टिंग कमेंट्स। पर्सनली आई यूज टू फेल सिक अ लॉट, और एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यू वुड नेवर रिग्रेट स्पेंडिंग प्रोडक्टिव टाइम फॉर योर सेल्फ, और इसका तुम पूरा ध्यान रखना। अदर देन दैट आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक माई नानी जी who recently passed away, because she has emphasized the importance of education in my life, and I would also like to thank my very very supportive parents and near and dear ones who have helped me a lot, and I hope आप लोगों के लिए भी सारी चीज़ें इस साल कोविड के बाद अच्छी हों। आप लोग अपना ध्यान रखें और आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बाय बाय।